पकड़ ले चक्री में। अरे कहीं ये चक्री लोकल तो नहीं है, इसमें आग पकड़ ही नहीं रहा। चिंकी वो देख, वहाँ बाबू एक चक्री में आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। चल हम चुपके से इस दिवाली बम को उसके पीछे फोड़ते हैं। हाँ बड़ा मजा आएगा। ये दिवाली बम बहुत तेज फटेगा। तो ठीक है, ये ले दिवाली बम और जाकर फोड़ दे बाबू के पीछे। चिंटू इससे बाबू को कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होगा। अब तू चुपके से जा और फोड़ दे इसे। ठीक है, जा रही हूँ फोड़ने पटाखे को। पकड़ने रे आग चक्री में। अरे वह आग पकड़ लिया, अब चक्री नाचेगा। अरे कितना देर बाद चक्री में आग लगा है और अब ये नाच भी नहीं रहा। अब देखना चिंकी कितना जोर से फटेगा वो दिवाली बम। अरे नाचना रे चक्री। अरे चक्री फट गया। अरे चिंटू वो दिवाली बम तो बहुत तेज फटा है। देखो बाबू उड़ के नीचे गिर गया। अरे किसने इतना बड़ा पटाखा फोड़ दिया घर में? चिंटू मम्मी आ रही है, चल जल्दी से छुप जाते हैं, नहीं तो मम्मी हम दोनों को बहुत मारेगी। हाँ जल्दी चल। अरे माई रे, इतना तेज चक्री कैसे फट गया? चक्री तो केवल नाचता है, फटता नहीं है। अरे बाबू तो तूने फोड़ा वो बड़ा पटाखा? नहीं नहीं मम्मी, मैंने पटाखा नहीं फोड़ा। मैं तो केवल चक्री जला रहा था। मैंने तुझसे कहा था कि तू छोटा है, पटाखा मत फोड़ना, लेकिन तू फोड़ दिया पटाखा। अब देख तेरा क्या हाल हो गया है। चिंकी, मम्मी ने तो हमारा इल्जाम बाबू के ऊपर लगा दिया है। अब हम बच जाएंगे पिटने से। चल हाथ आगे कर, तू बहुत बदमाश हो गया है। अरे मैंने नहीं फोड़ा पटाखा मम्मी। हाथ आगे करता है कि पीटूं। ये लो मार लो। और फोड़ेगा बड़ा पटाखा। बोल बदमाश कहीं का। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, मैंने पटाखा नहीं फोड़ा। चल अब जाके नहा ले, फिर से कभी मत फोड़ना पटाखा। ठीक है, जाता हूँ नहाने। चिंकी चल, अब हम ढेर सारा दिवाली के पटाखे खरीद कर लाते हैं बाजार से। ठीक है चलो। वो दिवाली बम हमने फोड़ा और बाबू पिट गया। अच्छा तो चिंटू और चिंकी ने फोड़ा था बड़ा पटाखा मेरे पीछे। अब बताता हूँ मैं उन दोनों चोरों को। अब इस नागिन छाप पटाखे को उन दोनों के पीछे फोड़ूंगा। तब मजा आएगा उन दोनों को, जब मेरी तरह वो दोनों भी काला हो जाएंगे। चिंटू मैं इस अनार बम को घर में जलाऊंगी। मैं तो इस रॉकेट को उड़ाऊंगा आसमान में। आओ आओ, मैं तुम दोनों को उड़ाऊंगा। तब तक आग लगा देता हूँ पटाखे में। अब आ जाओ तुम दोनों, ये जलता हुआ पटाखा फेंक दूंगा तुम दोनों के ऊपर। चिंटू चलो ना घर के आगे, पहले रॉकेट को उड़ाते हैं। नहीं नहीं, घर में ही चलो, पहले इस अनार बम को जलाएंगे घर में। ठीक है चलो तब। अब ये लो कमीनो। अरे ये क्या फेंक दिया बाबू ने हमारे पास? अरे चिंटुआ, ये नागिन छाप पटाखा है। अरे फट गया रे मम्मी। अब बोलो कमीनो, मजा आया? तुम दोनों ने ही मेरे पीछे वो बड़ा पटाखा फोड़ा था और उसके बाद मम्मी ने मुझे बहुत पीटा था, और अब तुम दोनों की बारी है पीटने की। मैं तो चलता हूँ चक्री नचाने। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाय दैया, मर गई मोरी मैया। चिंकी, तू एकदम चुड़ैल लग रही है और तू सियार लग रहा है चिंटू। अरे फिर से बाबू ने बड़ा पटाखा फोड़ दिया क्या? मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। अब वो हम दोनों को बहुत कूटेगी। मैं तो भाग भी नहीं पा रहा रे। अरे वाह वाह, चक्री नाचने लगा। ये पहले बाबू ने फोड़ा पटाखा, फिर अब तुम दोनों ने फोड़ दिया। नहीं नहीं मम्मी, हमने नहीं फोड़ा पटाखा, बाबू ने फोड़ा। तुम दोनों ने ही फोड़ा है पटाखा। बाबू तो यहाँ आसपास कहीं नहीं दिख रहा। चलो उठो और हाथ आगे करो।
ठीक है ये लो। Educational institutions organized panels to discuss the event, churches prayed for the welfare of immigrants, and families across the country debated the true meaning of American values. In this climax of media and public reaction, the story of Donald Trump's unexpected gesture at the border became more than just a fleeting news item, it became a catalyst for dialogue and reflection on a national and even global scale. The debate it stirred touched on fundamental questions about leadership, empathy, and the American promise of hope and opportunity for all. As the narrative of the day continued to unfold across various platforms, the impact of a single compassionate act served as a powerful reminder of the potential for change, the importance of kindness, and the profound influence of leading by example. For the Ramirezes and for many others, this day would be remembered not just for the gesture itself, but for the discussions and reflections it provoked, a true testament to the ripple effect of a moment of genuine humanity. In the days following the unexpected encounter at the border, the ripple effects of Donald Trump's gesture continued to permeate through the fibers of American society. Public opinion, often so firmly entrenched, began to show signs of a subtle shift. Across living rooms, coffee shops, and online forums, discussions burgeoned around the implications of what had transpired. The image of a president, known for his stringent policies, displaying an act of compassion, left many Americans wrestling with cognitive dissonance, challenging their preconceived notions about the man and the politician. In communities across the nation, the incident sparked a broader dialogue about the future of immigration policies. Activists and community leaders organized meetings to discuss the potential for change in how America handles its borders. Could this signal a new direction for our immigration policy? Became a recurring question in panel discussions and community forums. Some expressed cautious optimism, hoping that the president's actions indicated a willingness to adopt a more humanitarian approach, while others remained skeptical, wary of reading too much into a single, isolated incident. Meanwhile, educational institutions used the event as a teaching moment, prompting students to debate and analyze the complexities of leadership and policymaking. Professors encouraged their students to consider the balance between a leader's public persona and their private inclinations towards empathy and moral judgment. This educational discourse highlighted the nuanced nature of political leadership and the impact of personal actions on public perception. Amidst these ongoing discussions, Donald Trump himself took to social media to reflect on the encounter. In a tweet that quickly garnered millions of likes and shares, he stated, "Today at the border, seeing firsthand the challenges faced by innocent families, reminds us all of our duty to be compassionate. Let's continue to find ways to help those in need and keep our country safe." This message, uncharacteristically reflective and empathetic, added fuel to the speculative fire about possible shifts in his administration's approach to immigration. The tweet also served as a catalyst for further public debate. Supporters praised him for his leadership and humanity, interpreting his words as proof of his true intent and moral fiber. Detractors, however, questioned the authenticity of his sentiments, speculating about political strategizing and the potential for meaningful policy change. This division in public opinion highlighted the complex dynamics of political loyalty and the challenges of navigating public perception in the modern political landscape. As the story continued to unfold, with media outlets revisiting the incident in various think pieces and follow-up stories, the narrative evolved. It became a story not just about a political figure and a family at the border, but about a nation grappling with the definitions of leadership, compassion, and national identity. The discussions that ensued, both in public and private spheres, reflected a society in search of consensus on what it truly means to be American, what values the country embodies, and how it should project those values on the world stage. This phase of the narrative, rich in reflection and societal introspection, underscored the profound impact of a moment of humanity, how a single act can influence public opinion, spark dialogue, and potentially herald change.
It reminded all those watching and participating in the discourse that in the realm of politics, the personal can indeed be very powerful, resonating far beyond the immediate moment into the deeper currents of cultural and political life. As the dust settles on the events at the border, the impact of Donald Trump's unexpected gesture continues to reverberate through the lives it touched and beyond. For the Ramirez family, that day marked a new beginning, filled with hope and a sense of security they had not dared to feel in a long time. Their story, a poignant narrative of struggle and compassion, serves as a microcosm of the larger debates stirring across the nation about immigration, humanity, and leadership. The family, once anonymous faces in a crowd of thousands, found themselves at the heart of a national conversation. Their experience highlights the profound effect leadership actions can have on individual lives. It reminds us that behind the statistics and the rhetoric are real people with real hopes and fears. For Maria, Luis, Isabella, and Mateo, the president's gesture was not just a moment of kindness, it was